Good morning, students. This is the first video of Chapter 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. As we study in the case of animals, that some animals are fertile and others are non-fertile, means some can reproduce and some cannot reproduce. Similarly, in case of flowers, we have flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants reproduction शो करते हैं and non-flowering plants असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. सो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स. फ्लावर, a fascinating organ of angiosperms. Human beings have had an intimate relationship with flowers since the time immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbols of conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. See, ancient times से हम flowers को बहुत तरीके से यूज करते हुए आए, जैसे कि ह्यूमन इमोशंस को डिनोट करना, उनको शो करना, ये सब हम फ्लावर्स को यूज़ करके करते हैं. अगर हमें हैप्पीनेस शो करनी है तो हम दूसरे इंसान को फ्लावर देते हैं. अगर हमको ग्रीफ शो करना है तब भी हम फ्लावर देते हैं. इसी तरह से फ्लावर्स की कुछ कल्चरल वैल्यूज़ भी होती है. एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल. ऑर्नामेंटल मीन्स ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते थे फ्लावर्स से पहले, और अभी भी हम देख रहे हैं कि नया ट्रेंड आ रहा है फ्लावर्स को यूज़ करके ऑर्नामेंट्स बनाने का. सोशल और रिलीजियस वैल्यूज भी फ्लावर्स में होती हैं. तो फ्लावर्स हम बहुत तरीके से यूज करते हैं अभी भी, और एंशियंट टाइम में भी हम इसको यूज करते थे. सी, दिस इज अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फर्स्ट ओवरी, देन ओव्यूल, देन स्टाइल. दिस इज फीमेल पार्ट. ओके, देन कम्स एंथर एंड स्टिग्मा, देन पेटल, filament, sepal, and nectariferous area. All these various parts have different functions. The functions of all these parts we'll study in this chapter only. Moving forward, 2.2 pre-fertilization or structures and events. सी, प्रीवियस चैप्टर में हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के केस में प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स. तो प्लांट्स और फ्लावर्स में भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. ओके, बट मेल गैमेट इनमें स्पर्म नहीं होता और फीमेल गैमेट इनमें एग नहीं होता. इनमें मेल और फीमेल गैमेट कौन से होते हैं और वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग विथ प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से इवेंट होते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं. मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द plant is going to flower has taken place. सारे प्लांट्स फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते. कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स ही होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो फ्लावर्स किसी भी प्लांट पर अराइज होने से पहले बहुत सारे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस प्लांट में. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral perimordium. उन हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है सेल्स में, और फिर डिसाइड किया जाता है कि वो फ्लोरल पेरीमोडियम शो करेंगे या नहीं करेंगे, मींस प्लांट फ्लावर करेंगे या नहीं करेंगे. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स are gymnosperms and flowering plants are angiosperms. Inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flowers. In the flower, the male and the female reproductive structures, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. You would recollect that the androecium collects a whole of stamens representing the male reproductive organ, and the gymnosperm represents the female reproductive organ. सी, एनिमल्स के केस में हमने ये पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मेल बॉडी में होता है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है,
एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि फीमेल बॉडी में होता है वो एग या फिर ओवम प्रोड्यूस करता है। लेकिन फ्लावर के केस में सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस होती है। इनफ्लोरेसेंस के ऊपर फ्लोरल बड आती है। फ्लोरल बड फर्दर फ्लावर में डेवलप होती है। ठीक है, फ्लावर में भी मेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम एंड्रोईशियम बोलते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। Both endoecium and gynoecium differentiate and develops into further individuals. Let us now see how. Starting with stamen, microsporangium and pollen grain. In figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen. The long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. See, as you can see in the first figure, this is a filament stalk. The A diagram which we are seeing is the filament, that is the stalk, and this bilobed structure is known as the anther. Both these structures, filament and anther, are part of stamen. The proeximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. The number or length of stamens are variable in flowers of different species. If you were to collect a stamen, each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in the size seen in the nature. A typical angiosperm anther is bilobed, with each lobe having two theca, that is, they are diathecous. Often, a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. See, ये एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो दो लोब्स डिफरेंशिएट नहीं है, मींस एक लाइन ऑफ डेहेसेंस है जो कि दोनों लोब्स से निकल रही है। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है और इसमें थेका दिखते हैं लेकिन दोनों लोब्स एंथर के विजिबल नहीं होते। एंथर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि एंथर बाइलोब्ड होता है, बट ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम एंथर का देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिखता है हमें। The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a four-sided, that is tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. The microsporangia develops further and become pollen sac. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. सी, इस फिगर में आपको पोलन सेक दिख रहा है। यहाँ पर पहले माइक्रोस्पोरेंजिया था। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक में डेवलप हुआ। पोलन सेक एक सेक जैसा स्ट्रक्चर, मतलब एक थैली या कंटेनर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। सो माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि 4 स्ट्रक्चर्स थे उससे 2 पोलन सेक डेवलप हुए जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers: the epidermis, endothecium, middle layers, and the tapetum. The outer 3 layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of the microsporangium.
See, as you can see in the diagram, all layers are visible. First is epidermis. Epidermis is the outermost layer. Then comes endothecium, then tapetum. After tapetum comes sporogenous tissues. ये sporogenous tissues माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स भी इनको बोलते हैं बिकॉज ये टेट्राड फॉर्म कर देते हैं. एंड देन द मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन. ओके, उसके बाद जो टेपेटम लेयर है जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, टेपेटम का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजियस टिश्यूज बिकॉज स्पोरोजियस टिश्यूज से ही फिर टेट्राड माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergoes meiotic division to form microspore tetrads. See, in this diagram we can see all layers: epidermis, endothecium, middle layer and the tapetum. इसके बाद जो हमारा sporogenous tissue था वो microspore mother cell है because microspore mother cell gives rise to 4 tetrad microspore. एंड एंथर का डाइहेसेंस होना मतलब एंथर ब्रेक हो जाता है. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइहेसेंस्ड एंथर बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर separated and they are scattered all around the anther. Now, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, हर sporogenous tissue एंथर में हमने देखा कि 4 स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट थे हर लोब में. सो हर एक टिश्यू फॉर्म करेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करेगा. ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज PMC. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो स्पोरोजेनस टिश्यू से जब टेट्राड माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. और ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है? मियोसिस के थ्रू. माइटोटिक डिवीजन हम अभी तक पढ़ चुके थे लेकिन इसमें मियोसिस की प्रोसेस हो रही है. द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर जो डेवलप हुए हैं उसको टेट्राड फॉर्म में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 4 एक साथ अरेंज्ड होते हैं. ओके, एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन्स. जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसके अंदर से पानी जितना भी है वो खत्म हो जाता है. इसकी वजह से माइक्रोस्पोर जो टेट्राड फॉर्म में थे वो डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, और हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन के अंदर. इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल thousands of microspores or pollen grain are formed that are released with the dehiscence of anther. सी, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, एंथर का डाइहेसेंस हो रहा है, मीन्स वो डिहाइड्रेट हो गया है, उसमें से पानी बिल्कुल खत्म हो गया है. इसीलिए जितने भी माइक्रोस्पोर्स थे वो डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब अलग अलग हो रहे हैं. और डेवलप किस में हो रहे हैं? पोलन ग्रेन में डेवलप हो रहे हैं. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइहेसेंट एंथर. ओके, understood the structure of anther. Now in the next video we will take up pollen grain.